So hello guys, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hope you all are doing great. तो आज हम निकले हैं towards दमदमा लेक. थोड़ी बारिश हो रखी है, as you can see. थोड़ी सी बारिश होती है तो दिल्ली और गुड़गांव तो बह जाता है. So let's start for it and आगे मिलते हैं. Finally I have reached guys. ये मेरे घर से कुछ 47 to 50 kilometers के distance पे है. And this is the Damdama Lake. And I'll tell you a few things about it. So अरावली रेंज से घिरा हुआ है. यहाँ ये शहर से दूर है. एक शांत और सुंदर वातावरण में वीकेंड बिताने के लिए लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है. शांत स्थान पर अगर आप रो बोट्स, पैडल बोट्स और मोटर बोट्स में बोटिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं. दमदमा अपनी शानदार एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है, जैसे पैरासेलिंग, कायाकिंग, साइकिलिंग, एंगलिंग, रॉक क्लाइंबिंग या वैली क्रॉसिंग के लिए जाना जाता है. पास के अरावली पहाड़ियों में प्रकृति की सैर के लिए भी आप जा सकते हैं. आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. वीकेंड बिताने के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है. सो अगर आप नोएडा या गुड़गांव में रहते हैं आप यहाँ आ सकते हैं. ओ भाई साहब, कांटे हैं इधर तो. गाइस
बहुत ही पीसफुल जगह है एंड आई टेल यू अबाउट दिस प्लेस। यहाँ पे एक रिजॉर्ट है विच इज़ कॉल्ड सरस रिजॉर्ट एंड वो हरियाणा टूरिज़्म के अंडर है। सो वो रिजॉर्ट है उस तरफ। कुछ पिक्चर्स में डाल दूँगा विच आई कुड रिकॉर्ड। एंड इफ़ यू सी ये लेक है, इसके अंदर बोटिंग होती है, वो सरस रिजॉर्ट वहाँ पे कराता है और वहाँ पे कुछ झूले वगैरह भी हैं फॉर किड्स अगर आप लेके आते हैं उनको। बहुत अच्छे रूम्स भी बनाए हुए हैं, बहुत डेकोरेटिव रूम्स हैं, अच्छे रूम्स हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट अदर एक्टिविटीज़, यहाँ पे कैंपिंग भी होती है। वहाँ पे एक कैंप है, बहुत अच्छा कैंप है। आगे एक ताज का रिजॉर्ट भी है विच इज़ रियली गुड। फिर एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जैसे So this is the Saras resort and ये वहाँ का बाहर का पार्किंग एरिया है and this is the backyard जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं like camel ride and कुछ बच्चों के राइड्स हैं। So yeah, that was the vlog all about Damdama Lake, and thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and like if you liked it, and milte hain next vlog mein. So keep traveling, have fun and keep smiling. Take care guys, bye.